So, viewers, the BJP has revived a pact signed in 1991 and implemented in 1994, alleging that it committed India to sharing sensitive information with Pakistan. Calling it a serious concern, the BJP MP Nishikant Dubey has questioned, was this government and this agreement that was signed back then an act of treason? He accuses the Congress of appeasing a Pakistan-centric vote bank and demanded that Rahul Gandhi break his silence. The BJP has now made the old pact a new flashpoint in the political battlefield. Listen in to the BJP MP Nishikant Dubey on his accusation on the Congress party, accusing them of treason against India. We're right now being joined by BJP member of Parliament निशिकांत दुबे। सर, जिस प्रकार से राहुल गांधी हमलावर हो रहे थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पे कि पहले भारत ने क्यों बताया और क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, अब उसका काउंटर हम देख रहे हैं कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स आज ट्वीट किए हैं। आपने कहा है कि एक 1991 में जब राजीव गांधी की समर्थित सरकार थी तब एक डॉक्यूमेंट आपने उस जमाने का ट्वीट किया कि किस प्रकार से इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो, ट्रूप मूवमेंट हो, उसको लेके पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट था। और आपने ये भी कहा है कि 94 में ये जो है जब कांग्रेस सरकार थी तब ये लागू किया गया। और आपने ये भी कहा है कि ये एक पाकिस्तानी वोट बैंक को केटर कर रहे हैं राहुल गांधी और एक तरह से सेडिशन एंटी नेशनल आपने इस स्टेप को कहा है। क्या कहेंगे, क्या है सर इस? निश्चित तौर पर ना, आप एग्रीमेंट आप करो, बाइंडिंग हमारे ऊपर फोर्स लगा दो और उसके बाद आप मेरे ही ऊपर क्वेश्चन उठाओ। आज ये जो 1991 का एग्रीमेंट है जो 94 में इंप्लीमेंट किया नरसिंह राव की सरकार ने, वो क्या कहता है कि आप किसी प्रकार की कोई एक्सरसाइज करोगे, मिलिट्री एक्सरसाइज करोगे, ट्रूप की मूवमेंट करोगे, एयरफोर्स की करोगे, नेवी की करोगे, आर्मी की करोगे, आपको 15 दिन पहले जो है उसकी जानकारी दे देनी है। तो आपने ये देशद्रोह नहीं किया। आप जो है क्यों जानकारी दोगे, किस प्रकार की जानकारी दोगे, काहे जानकारी दोगे? तो जिस तरह के एग्रीमेंट कांग्रेस करती आई है, जैसे सिंधु जल समझौता है, वर्ल्ड बैंक के दबाव में आपने कर दिया, हमारा पानी जो हमारे किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, उनको खेती का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, आपने उसको एग्रीमेंट कर दिया। आज हम जो है उसको केवल सस्पेंड कर पाए ना, हम उसको यदि कैंसिल करना है तो कैंसिल करने के लिए लाखों चने चबाने पड़ेंगे। पूरी दुनिया जो है आज ग्लोबल वर्ल्ड में पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ दिखाई देती है। इस तरह के नेहरू लियाकत पैक्ट कर दिया, जो वक्फ कानून जो आपको दिखाई दे रहा है, नेहरू लियाकत पैक्ट के आधार पर जो है वो आगे बढ़ा। आप एग्रीमेंट कर लो, आप इस देश में समस्या पैदा कर लो और उसके बाद आप हमारे ऊपर क्वेश्चन करो। मेरा यह मानना है कि जो एग्रीमेंट कांग्रेस ने किया, ये कांग्रेस का जो एग्रीमेंट है ये देशद्रोह है और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके ऊपर देशद्रोह का कानून लागू होता है कि नहीं होगा। सर, आपने ये भी कहा कि एक तरह से जैसे आपने देशद्रोह की बात की, आपने कहा ये एंटी नेशनल स्टेप था। और क्या हम इसे देखें कि राहुल गांधी का जो काउंटर आ रहा है एस जयशंकर पे, उस पे आपने ये डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं, क्योंकि इस पे दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स, फॉरेन सेक्रेटरीज जो हैं उनके साइन हैं। और आपने ये भी कहा कि अपनी ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट के बारे में, ट्रूप्स की मूवमेंट के बारे में आखिरकार आप क्यों बता रहे हैं पाकिस्तान को ये एक देशद्रोह है? देखिए, 1947 के बाद से जब से ये भारत का पार्टीशन हुआ, कश्मीर के मसले पर आतंकवाद से भारत जूझ रहा है। हम पाकिस्तान को एक आतंकी राष्ट्र हमेशा से मानते रहे, कभी भी पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन नहीं हुए हैं। पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया है एक आतंकी राष्ट्र के साथ, जो कि 78 साल 80 साल से हमारे लोग जो जूझ रहे हैं इस आतंकवाद से, उसके साथ इस आर्मी के डिप्लॉयमेंट का, नेवी के डिप्लॉयमेंट का, एयरफोर्स के डिप्लॉयमेंट का एग्रीमेंट साइन कर लेना और उसको 15 दिन पहले खबर कर देना, क्या ये देशद्रोह नहीं है? क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है? मेरा सीधा सवाल यही है और इसी के लिए आज मैंने इसको ट्वीट किया। 91 में साइन हुआ था, 94 में जब कांग्रेस सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब ये इंप्लीमेंट हुआ था निश्चित तौर पर। और जिस वक्त 91 में साइन हुआ उस वक्त भी कांग्रेस ही उसको समर्थन दे रही थी। बीपी सिंह की सरकार उन्होंने तोड़ी थी और सरकार उन्होंने बनाई थी और उसके बाद 94 में इसको इंप्लीमेंट किया, जिसमें फुल फ्लेज्ड कांग्रेस की सरकार थी। नरसिम्हा राव जी उस सरकार के प्रधानमंत्री थे और आज जितने कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो सभी उसके मंत्री थे। तो इसीलिए कांग्रेस ने देशद्रोह किया और केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स। उनको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए और मुस्लिम में भी उनको पाकिस्तानी मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, उनको बांग्लादेशी मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, क्योंकि जिनका कोई अता पता नहीं है, जिनको ये पता है कि ये हमारा देश नहीं है, हम किसी के रहमो करम पर जिंदा हैं, तो जब वो वोट करने जाएंगे तो कांग्रेस को वोट करेंगे। यही उनकी राजनीति है। सर, आपने कहा कि पाकिस्तानी जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक का, उसको केटर कर रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं? इसका मतलब क्या है? आखिरकार एक अपीसमेंट पॉलिटिक्स का तो इल्जाम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पे लगाती है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो वोट बैंक है उसको केटर कर रही है, उसका कारण यह है ना कि जो आ रहे हैं लोग,
जैसे हम बांग्लादेशी घुसपैठिए से जूझ रहे हैं। झारखंड में बड़ी समस्या, झारखंड में नहीं, बिहार में भी बड़ी समस्या, बंगाल में भी बड़ी समस्या। बंगाल अभी चुनाव चलिए, आप हमारे साथ मालदा, मुर्शिदाबाद, कलियाचक चलिए, आप देखेंगे अभी मुर्शिदाबाद की घटना में आ रहा है कि टीएमसी के लोगों ने सपोर्ट किया, तो बांग्लादेशी लोगों ने इन्हें किया ना। उसी तरह से यहाँ शादी विवाह के नाम पर जो है, कोई मैच देखने के नाम पर पाकिस्तानी आते हैं, चले जाते हैं। इस तरह की जो समस्या से हम जूझ रहे हैं, वो जब उनको पता है कि ये देश हमारा नहीं, यहाँ के मुस्लिम को पता है कि ये देश उनका है, तो ये देश उनका है, तो वो अपने अधिकार के साथ बात करते हैं। जब उनको लगेगा कि वो किराएदार हैं और किसी के रहमो करम पर हैं, तो इसी को कैटर करना है। यही कांग्रेस हमेशा से करती रही है। इसलिए पाकिस्तानी वोट बैंक और बांग्लादेशी वोट बैंक को खुश करने के लिए वो पाकिस्तान के कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, इस एग्रीमेंट का यही मतलब है। सर एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी जब एस जयशंकर पे सवाल उठा रहे थे, अब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपने ये ट्वीट किया है, कांग्रेस को अब आके जवाब देना चाहिए, क्योंकि वह एस जयशंकर पे सवाल उठा रहे थे, तो इस ट्वीट के बाद कहीं ना कहीं आप जवाबदेही मानते हैं कांग्रेस की? कांग्रेस पूरी जवाबदेही है। जयशंकर जी का क्या मतलब है? मतलब तो यह है कि 1991 से लेके आप आज तक जो एग्रीमेंट किए हो, उस एग्रीमेंट पर आप जवाब दोगे ना। यहाँ तो जयशंकर सरकार ये सब का कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आपने देशद्रोह वाले डॉक्यूमेंट पर साइन किया या नहीं किया, ये आपको जनता को बताना है। So that's a clear message coming in from BJP MP Nishikant Dubey, who clearly stated that it's kind of an anti-national document that was signed between India and Pakistan at that particular time. With video journalist Sanjeev Chhetri, Mohit Bhatt for Times Now in Delhi. It was an anti-national pact. It is against the country. That's the sensational charge that has come in from the BJP. We have the first response that has come in from the Congress party, and my colleague Amita is joining us with that response. It's a big charge, Amita, that has been leveled by the BJP, saying for appeasement politics, the Congress party indulged in treason. What's the response of the Congress? Well, already we are looking at how Nishikant Dubey has been calling it as a Deshdroh document, and the response that is actually coming from the Congress's side is something that he has already mentioned in this exclusive conversation that we just played out with our colleague Mohit. So this is Pawan Khera of the Congress party who is reacting on Nishikant Dubey's post, saying that this person needs to know that in late February 1991, Indian National Congress had withdrawn support from the Chandrasekhar government. Elections to the 10th Lok Sabha had already been announced. For further information, please contact your party colleague Neeraj Shekhar MP. But as far as when it comes to coming into force of this pact is concerned, which was in 1994, and this is something that Nishikant Dubey Pratya has been talking in that exclusive conversation that he had with us. Okay, all right. Amita, thank you for joining us with those details. The Congress party's first response has come in as the BJP MP put the spotlight on this agreement that was signed in 91. Niyamika is joining us on the broadcast, and Niyamika, this comes amid the Congress party raising questions on the External Affairs Minister, claiming that sensitive information was given to Pakistan, but this document signed in 91 has come back to haunt the Congress party. Well, yes, and that is the first response which is coming in on the part of the Congress party, as Congress party's chief spokesperson Pawan Khera has also tweeted in this regard. And to talk about this matter more, we have also been joined by the former Member of Parliament, Mr. Madhu Gaur Yakshi, with us. The manner in which Nishikant Dubey had made this sensational allegation against the Congress party, that there was an agreement which was being signed in 1991 between India and Pakistan, and it was being mentioned there only that all the details will be shared before any kind of attack. So he is saying that isn't it a treason, as Rahul Gandhi is raising questions upon S. Jayashankar for sharing the information with Pakistan? This only proves by his tweet that what Mr. Jayashankar and Minister of External Affairs been denying after confessional statement by the External Affairs Minister, that it is informed to the Pakistan forces where we are going to attack. Now it's proven that what Mr. Rahul Gandhi has been saying, that Mr. Jayashankar has informed the Pakistan forces, it's a betrayal, it's an amount to a treason. And whatever the technicality which is talking about the resolution passed in 91, that's not the important matter here. You are in power past 11 years. Mr. Modi used to make a statement, "Chappan chate ki chhati, ek sir kat gaye to 10 sir katunga." What is stopped you to change if any such rule is existing, number one. Two, now it's a proven what being Minister of External Affairs is denying, that they have informed, and it's a betrayal, it's a letdown to the Indian forces and the Indian people of India. And it's a now let his External Affairs Minister come out and say that he made a confessional statement not to deny it and accept it. Your own party MPs is tweeting that it has been done.
That's the big question now. In fact, Nishikant Dubey is also saying that this is nothing but just an appeasement politics on the part of the Congress party to get the vote bank of the Pakistanis or the infiltrators who are here in our country. So far, where are those infiltrators came into the India over 200 kilometers at Pahalgam? It's almost a month. When you can track the terror establishments in Pakistan, what is stopping within India in last 1 month? What have you done? We have not caught those terrorists who committed the crime, heinous crime. So it's a failure of the Home Ministry and Government of India, and Mr. Nishikant Dubey should question his own government and ministers what they have done, committed a biggest crime on Indian forces. So let them come out and openly say what it by informing Pakistan forces what resulted losses to the Indian Navy and Air Forces. So any motive you see behind this move of the BJP MP Nishikant Dubey at this particular point in time, the manner in which this document has been tweeted by him, do you think that there is some motive behind this move? The motive is the culprits who committed crime, the party and the government, by their own MP is accepting it now. They have informed Pakistan forces, which is unacceptable to the people of India. Okay, It's the biggest crime committed on people of India. Thank you so much, sir. So that you have heard that this was a reaction from the Congress party, as they are also questioning that if there was any such kind of agreement which was being signed by our country, then it was the BJP government in the past for a decade, and why this agreement was not being cancelled at that point of time or suspended at that point of time. And he is also saying that Nishikant Dubey himself is admitting that it was the External Affairs Minister S. Jaishankar who has now shared the details with Pakistan before the attack which was being done by our armed forces. Okay, all right. Niyamika, stay with us. This comes at a time when the Congress party has been raising these questions of the External Affairs Minister. In fact, has been alleging that intel was shared with Pakistan before the strike as part of the Operation Sindoor. Listen into what the Congress party has said and how it questioned the government. तो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब देगी। But viewers, here's where it gets interesting. The statements that have been made by leaders in the opposition are in stark contrast to the comments made by those in Pakistan. Pakistan's DG ISR was in fact asked if India did forewarn them about Operation Sindoor, to which he said that it is an absurd claim. This is not the BJP, but Pakistan that is fact-checking the Congress party. That's not it. Those within Pakistan are also feeling the pain of defeat and humiliation. Pakistani senators are questioning the failure of their own defences and admit that Pakistan has been reduced to a laughing stock by India. जिस तरह अभी ये रिसेंट वाकयात गुजरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई का, जिसका हमने मजम्मत भी किया है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि GHQ से 5 किलोमीटर चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ, और अगर हमारे हदूद में ये यहाँ तक आ सकता है तो इसके लिए सर मुझे तो अफसोस है कि कम से कम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए ज्वाइंट सेशन होना चाहिए। हमारे जो वज़रा साहिबान हैं वो इस वक्त बहुत मोहतात होकर बात करें, क्योंकि अगर वो इतनी कमज़ोर स्टेटमेंट देते हैं कि ये जी हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं है, मैं व्हाट्सएप पे बैठ के ये आपको बता रहा हूँ कि जहाज़ गिरे हैं, हमारी बैठ के एक हमारा तमस्खर उड़ाया जाता है। हमारे मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर हैं, हम वहाँ जब बैठ के सुनते हैं तो खुद अपने दिल में हम जो है शर्मिंदा हो जाते हैं। So that was the response that came in from within Pakistan. Pakistani leaders in the floor of their house are talking about how India was able to attack Pakistan and Pakistan was caught unawares, and talking about the failure of the defenses of Pakistan. And yet there are leaders within the country, within India, who are questioning the government and the forces. So amid the politics that's playing out in the country with Rahul Gandhi and other Congress leaders questioning the government and claiming that the
Ministry of External Affairs had given out information to Pakistan prior to the attacks and saying that it is a strategic failure. This answer has come in from Pakistan. Rashid Alvi of the Congress Party is on the phone line with us. Mr. Rashid Alvi, amid the Congress Party's charge against the External Affairs Minister, the BJP has put out a pact that was signed in 91 and they say that this was treason by the Congress Party. How would you respond? You know, I do not know about this pact and Congress Party has already denied it. But it means Bharatiya Janata Party and its leader, they are accepting it, that they have informed Pakistan in advance. This is the proof. What kind of pact is a different thing. But they want to prove that we are following that agreement. It means our foreign minister has, whatever statement he has given, that at the start we informed Pakistan. It means they are admitting it. And if they have informed before attacking Pakistan, it is nothing but a crime against country. You're saying, Mr. Rashid Alvi, that this pact was never signed because the BJP says that for vote bank politics, the Congress Party had signed this agreement. You know, first of all, Congress Party has already denied it. As far as BJP and its government is concerned, you have suspended Indus agreement, Indus Pact. It was also a pact between Pakistan and India. You have no respect for that. You have suspended it, but you are following this pact. Even if there is any kind of pact in 91, it means you are following it. And you have informed Pakistan what kind of government it is, what kind of leaders they are. And Nishikant is not, I know him. He is not so competent to find out such kind of pact. It is someone from the government who is helping him. Okay. All right. All right. Mr. Rashid Alvi, thank you for joining us. The Congress Party has denied that there is any such pact. Let's go back to Mohit Bhatt, who had that conversation with Nishikant Dubey, and the BJP has accused the Congress Party of treason. That's quite a sensational charge, Mohit. But the Congress Party has denied it and in turn has also claimed that this seems to be admission that the External Affairs Minister did in fact respond. Before I come to your reaction coming in from the Congress, let's cut in. 6 मार्च 1991 को राजीव गांधी जी ने चंद्रशेखर जी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। यह अप्रैल का अग्रीमेंट है, जहां तक मेरी जानकारी है 6 अप्रैल वगैरह का अग्रीमेंट है। लेकिन बार बार बेवकूफी दिखाना बीजेपी की जरूरी नहीं है। असलियत यह है कि ये अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था, जिससे हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का अगर कोई मूवमेंट हो तो दोनों देशों में कोई गलतफहमी ना पैदा हो। ये पीस टाइम अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में, जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। बीजेपी मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां अगर रचनी बंद कर देगी तो इस देश की सुरक्षा शायद बेहतर कर पाएगी। रोज नए फर्रे लाकर आप अपनी बेवकूफी दिखा सकते हैं, लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। निशिकांत दुबे Okay, all right, not taking any questions, just issuing that statement. And Mohit, that's a response of the Congress Party saying that this is all fictitious. It has been made up by the BJP. Well, you see, Nishikant Dubey, and I just spoke to him, he has basically cited the documents which, according to him, and they are in the public domain, was signed in 1991 when Chandrasekhar was the Prime Minister and Rajiv Gandhi and the Congress Party were giving support to him. So this is what Nishikant Dubey says, and Nishikant Dubey says that in 1994 this was implemented when Congress Party was in power under PV Narasimha Rao. So now the BJP is asking that why exactly such kind of an agreement was signed between India and Pakistan, which states that there should be an information given to each side regarding the troops movement or before
any army exercise. Now, there's a serious charge coming in from BJP, and the BJP MP Nishikant Dubey has also hit out at the Congress party and Rahul Gandhi, saying that in order to catering to the appeasement politics, they are catering to the appeasement politics of Pakistan, because people from Pakistan, Bangladesh, they illegally come to the country, and with such kind of activities, they will vote for the Congress party. So this is a very serious charge coming in from the BJP, where BJP MP Nishikant Dubey clearly as of now says that why exactly such kind of anti-national seditious treaty signed between India and Pakistan. When Congress was in power, it was implemented. So the BJP is asking questions from the Congress party, and this is seen as a counter to Congress, and Rahul Gandhi asking questions to S. Jaishankar, basically saying that why exactly Pakistan was informed about Operation Sindoor, and because of that particular information, according to the Congress, Hafiz Saeed and the other terrorists left that particular area where airstrikes were conducted by armed forces, to which we have seen an explanation coming in from the MEA. They have clearly stated that the statement of S. Jaishankar has been distorted. He was speaking about the initial stages of Operation Sindoor and how Pakistan has been warned of the consequences. Okay. So clearly we see massive politics on this issue, but clearly this particular document has put Congress party in soup. We have to wait and watch what exactly would be the counter coming in from them. Okay, all right. For now, the Congress party has denied it completely and said that no such pact exists. The BJP says that this is clear proof of the Congress party's treason. Developing story, big story on Times Now, and we continue getting you reactions of both the BJP as well as the Congress. Quick break now. We'll be right back.